Hello guys, this is the third lecture of chemical kinetics of class 12th, chapter 3, and this is the continuation of the third lecture. So in the previous or in the third lecture we have studied about the rate law. I will be summarize it first, then we will continue what should be studied today. So in the third lecture we have studied about the rate law. What rate law tells about? Rate law tells about the explain the dependence of rate of reaction on concentration of species in reaction. Species means reactant or product. कोई भी वो चीज हो सकती है in reaction. And then we talk about we will study the simplest form of dependence of concentration on rate expression. And then to calculate the rate law, there is only one method to calculate rate law, and that method is experiment. And then we will do some example, and from example we tell about the how rate of reaction depend upon the concentration of reactant. After that we have studied about the Goldberg and Wage laws of mass action. What Goldberg and Wage said that we don't have to perform an experiment to calculate the rate law expression. Actually we just need the stoichiometric coefficient of that species to calculate, to know the order of reaction with respect to that species. Actually this is the order of reaction with respect to A, so we use only the stoichiometric coefficient of A to know the order of reaction of that with respect to that species. That's Goldberg and Baghe said that, but we found that this law of mass action is valid only for set of reaction, but it is not valid for all type of reaction. So that's why we got a conclusion that this law is not true. So we have only one method to calculate the dependence concentration on rate of reaction, that is the experimental method. There is only no another way to calculate the rate of reaction. Uh, then we generalize the rate law expression in terms of x and y, that is the order of reaction with respect to A, and y is order of reaction with respect to B. And then we go through the proportionality constant, that is the rate constant, and we talk about the rate constant. So where k is the rate constant, velocity constant, specific reaction rate. So according to this rate law expression, actually from this rate law expression, if the concentration of A and B is unity, then the rate constant will be equal to the rate of reaction. So this is the definition for the rate constant, and the main point for rate constant here is that unit of the rate constant. Because of the unit of the rate constant, we can calculate the order of the reaction. So to find the unit of the rate constant, we then do some mathematics, and after mathematics we get the unit of K for nth order reaction. The unit of K for nth order reaction is mole per liter to the power 1 minus n second inverse. So this is the generalized unit of K. If we have given the K unit, according to that unit we compare that unit with this generalized expression, and then we can calculate the order of reaction. So with that unit of the K, we define the order of reaction for each order. That is for zero order reaction, unit of K is mole per liter second inverse. For first order reaction is second inverse. Please memorize this first order reaction unit for K, that is second inverse, because lot of the question will come from the first order reaction. Okay. And then second order reaction for unit is liter per mole per second, and for minus half order reaction unit is mole per liter ki power 3/2 second inverse. And from order of reaction we again prove that the law of mass action by Goldberg and Bagge is wrong. uh, we prove like that uh, according to law of mass action, uh,
the order of reaction should be the sum of the stoichiometric coefficient of all the reactant. Okay. So if we have balanced equation, for in balanced equation, all the reactant stoichiometry will be integer and will be a positive number. So order of reaction according to law of mass action will be positive and integer. But in reality, we have seen that the order of reaction can be any real number. It is any real number. It is positive, negative, or fraction, or zero, even zero. So if we follow the law of mass action, we cannot get the negative or zero order of reaction. So uh, law of mass action is wrong, because we have found that the order of reaction is any real number, maybe positive, negative, fraction, and zero. Okay. Here luma means law of mass action. Law of mass action. Then we have solved some numerical to understand the concept of rate law, and today we will going to solve another type of equation, another type of questions to know the concept, and then we summarize the lecture 3. Okay, so here I will write it here, lecture 3 continued. Continued. Okay, so we today we are going to solve another type of questions which are very important. So question number 1, if we have 2a plus b give product, and we have given when concentration of a alone is doubled, then rate of reaction increases by 2 times. 2 times. And when concentration of A and B alone, no, not alone, concentration of A and B both double, then rate of reaction increases by, now what we have to calculate? So write rate law expression and find order of रिएक्शन. जब ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाता है. जब ए और बी दोनों को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाता है. तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, एंड देन ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड ले लेते हैं आर डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर है, गिवन है, और वो हो है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स कर दिया हमने और बी को कुछ नहीं किया. तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2. फिर आर डबल डैश है, वो 8R के बराबर है जब ए और बी दोनों को डबल कर दिया गया है. ए को भी डबल कर दिया है और बी को भी डबल कर दिया है. तो ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी विल डू सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. तो we get 2 is equal to 2R by R. 2 is equal to K to K कर गया, B से B कर गया, 2 times X. Here X is equal to 1. Okay. Then we do third equation divided by first equation. So 8
इज इक्वल टू 8/r, आर आता कैसे कैसे हट गया, तो 2 times x and 2 times y. So 8 is equal to 2 times x plus y, where 8 is 2 cube, 2 times x plus y. So x plus y is equal to 3, where x is equal to 1, to y is equal to 2. Hence we get first order with respect to A and second order with respect to B. So rate law expression क्या हो गया? Now rate law expression is R is equal to K A की to power 1 and B की power 2, and order of reaction n is equal to x plus y, n is equal to 3. So order of reaction, third order reaction. Okay, this is how solve this type of equation. Now we will take one more example and then summarize. Question number 2. In question number 2, we have A plus 2B plus 4C gave project, and we have when volume of concentration, volume of container, volume of container is doubled, then rate decreases by 8 times. When concentration of A alone, not alone, concentration of A, not alone, concentration of A is doubled and concentration of B is half. Then rate increases by 4 times. And concentration of C alone is increased by 4 times. Increased by 4 times. Then rate increases by 64 times. So write क्या करना है आपको? Write rate law expression and find order of reaction. So solution. अब ये इस केस में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्चुअली अब ये A plus 2B ना होके अब इसमें 3 रिएक्टेंट है, A plus 2B 4C गिव्स प्रोडक्ट. तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही सिंपल तरीका है. यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो हमारा जो रेट लॉ का जनरल एक्सप्रेशन होगा, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा पहले रेट लॉ का, तो वो चेंज हो जाएगा. तो रेट लॉ का जनरल एक्सप्रेशन होगा R इज इक्वल टू K टाइम्स A की द पावर X, B की द पावर Y एंड C की द पावर Z. ओके, नाउ अब make number of this equation number 1 and then read the question. What questions asked?
When volume of container is double, rate decreases by 8 times. So in the previous class, that is lecture 3, we studied one question that tells us about volume is inversely, or volume is inversely proportional to rate, or rate is inversely proportional to volume, or inversely proportional to concentration. So if volume of container is stable, so concentration of each reactant or each species, not reactant, will be decreased since volume of container is double. So we write R dash, which is equal to 8 times R, is equal to K 8 by 2 की power x, B by 2 की power y, and C by 2 की power z. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. Okay, and then what is said? It says concentration of A is double and B is half, and rate increases by 4 times. So R double dash is equal to 4R is equal to K. Concentration of A is double, 2A to the power x. Concentration of B is half, B by 2 to the power y, and there is no change in concentration of Z. Equation number 3. And R4 dash is equal to 64 times R, or even R3 dash equal to 64 times R. Concentration of A is unchanged, A की power x. Concentration of B is unchanged, B की power y, and C is increased by 4 times, 4C की power z. This is question number 4. Now we have total of 4 equation, and in from the four rate law expression, where one rate law expression is your generalized, and 3 rate law expression from the question. So actually we have 3 rate law expression. So from these 3 rate law equation, we have to find the x, y, and z. So 3 unknown, 3 equations will be made. So first we will do 4, equation number 4 divided by equation number 1. So what we'd get? 64 k is constant, A to power x is constant, B to power y is constant. Here 4. So 4 to power z. So 64 is 4q is equal to 4 to power z is equal to z is equal to 3. So we get z is equal to 3, that is third order reaction with respect to C. Third order reaction with respect to C. Now we have calculated Z. Okay. Now we will do both are same. So now we'll do third y first and then first y second. So we will do equation third divided by equation first. So what we get? Let me see. Third by first. So 4 equal to 2 की power x, and we have third by first, and 1 by 2 की power y. Okay. 2 की power x and 1 by 2 की power y. Okay. So 4 is equal to 2 to the power x and 1 by 2 to the power y, which means 4 is equal to 2 to the power x minus y, which means 2 की power 2 is equal to 2 की power x minus y, which means x minus y equal to 2. So we have equation number 5. And then we do first divide by second. So in second equation, first divide by second मतलब हो गया
1 by 8, this divided by this. So this, so 2 की power x, 2 की power y, and 2 की power z. So, so actually r is decreases by 8 times. There is this is r by 8, not 8 bar. R decreases by 8 times. Okay, there is a mistake here. R is decreases by 8 times, so R dash is R by 8, not 8R. So like first by second, we have 1 by 8 is equal to 2 की power x, not 1 by 8. Is 8 is equal to 2 की power x, 2 की power y, 2 की power z. So 8 is equal to 2 की power x, 2 की power y, and 2 की power z, which means 2 की power x plus y plus z, which means 2 cube is equal to 2 की power x plus y plus z, which gave x plus y plus z is equal to 3. Question number 6. We know that z is equal to 3. Z is equal to 3. So from equation 6, we get x plus y equal to 0, and from equation 4, 5, we get x minus y is equal to 2. Sum this equation, on add, we will get 2x is equal to 2. So x is equal to 1. It means first order reaction with respect to A. With respect to A. And put x is equal to 1 in equation 5th, we get 1 minus y is equal to 2, y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1. So इसको क्या बोलेंगे, -1 order reaction with respect to B. ठीक है, तो टोटल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बना, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया R is equal to K A की पावर x, B की पावर y, and C की पावर z. So R is equal to K A to the power 1, B to the power -1, and C to the power 3. This is our rate law expression, and order of reaction is x plus y plus z, which is equal to 3. So we have third order reaction. Okay, so actually these type of reaction can be made from rate constant or rate law expression or order of reaction. So I have done all the variants of question, all the variant questions. Now we will summarize this. So some important, sorry, some important point about order of reaction, about order of reaction, some important point about order of reaction. Okay. So what are the point? We will use different color here. First point. First point is stoichiometry. Stoichiometry coefficient. Coefficient have coefficient have nothing to do nothing to do with order of reaction.
do with order of reaction. So first point is just tell that your law of mass action is not true. We will take example. So 2N2O5 gives 4NO2 and O2. सो अगर हम स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से बात करें तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होनी चाहिए थी, बट रेट ऑफ रिएक्शन अगर तो आप देखें जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है वो ये निकाला गया है N2O5 की पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और N2O5 के रेस्पेक्टिव 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। बट अगर स्टैइकोमेट्री की बात करें, स्टैइकोमेट्री के हिसाब से तो 2 आना चाहिए था, 2 नहीं आ रहा है, 1 है। इसका मतलब है स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप डायरेक्ट ये नहीं लिख लेंगे कि स्टैइकोमेट्री का इसके 2 तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विद डिफरेंट कलर, दिस वन, पॉइंट नंबर 2, इन rate law, in rate law, concentration terms of product can be present. In rate law, concentration terms of product can be present, So in the last 3A and 3B lecture, we have studied a lot of questions, but in every questions we have seen that the rate of reaction always depend on the concentration of the reactant, but in some cases that is not true. Rate of reaction may depend on the concentration of product. So we will take an example, 2O3, that is ozone, when converted to oxygen 3 times O2, अगर इसका आपने एक्सपेरिमेंटली रिटर्न रेट देखें तो ये होता है कि O3 का स्क्वायर एंड O2 की पावर -1, O2 की पावर -1, हियर O2 इज योर प्रोडक्ट। तो रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आ रही है, ये भी आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ना कि स्टैइकोमेट्री से हमने निकाला है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो ये आ रहा है, स्टैइकोमेट्री के हिसाब से भी आपका 2 आता, बट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ग्रीन कलर से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज ले लें, पॉइंट नंबर 3, in rate law, expression, concentration term of some reactant may be absent, of some reactant may be absent। तो अभी तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें देखे कि अगर 3 रिएक्टेंट है तो तीनों रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो तीनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, चाहे 2 रिएक्टेंट तो दोनों पे कर रहा था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट हो सब पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे कंसंट्रेशन टर्म पे। आपका ये भी हो सकता है कि
आपका सिर्फ और सिर्फ तीन कंसंट्रेशन टर्म, तीन रिएक्टेंट हैं, दो पे डिपेंड करे, एक पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे भी पॉसिबल है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि NO2 react with carbon monoxide, it gives NO and CO2। तो इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो ये होता है कि NO2 का स्क्वायर एंड CO की पावर 0। इट मीन्स R is equal to K NO2 का स्क्वायर। नो डिपेंडेंस on concentration of CO which is a reactant। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। और सम रिएक्शन आपकी ऐसी भी होती है, जैसे हम बात करें इसकी CH3COONA की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए वाटर के साथ, तो CH3 COH NaOH COOH प्लस NaOH ये बनता है। तो इसमें क्या होता है ना, इस रिएक्शन में सिंस हमने जो वाटर लिया, ये वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रिएक्टेंट जो होता है वो एक्चुअली डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। डाइल्यूटेड हाइड्रोलिसिस में, हर हाइड्रोलिसिस में नहीं होता है, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोलिसिस डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये, अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट जो आएगा वो KCH3COONA की पावर 1 होती है, वाटर की पावर 0 होती है इसमें। तो इसको हम लोग, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंस जो वाटर है वो रिएक्शन में पार्ट तो ले रहा है, बट रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन जो है वाटर की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सिर्फ CH3CONA जो है, सोडियम एसिटेट, इसी की कंसंट्रेशन पे रिएक्ट कर रहा है, तो इस तभी हम लोग उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसमें भी आपका देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड नहीं किया, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट एक्सप्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने कंसंट्रेशन है सब पे डिपेंड करेगा। और एक लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन concentration terms of concentration concentration term of concentration term of catalyst may be present, may be present। So there are some reaction which do under the presence of catalyst। Actually catalyst is used to minimize the activation energy, as we studied in the first lecture। So that catalyst will not take part in the reaction, but there are some reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of the catalyst। So हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको अगर हमने ऑक्सीडेशन किया इन टर्म्स ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ NO, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हुआ। ठीक है, SO3 में। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट होता है KO2 का स्क्वायर एंड NO की पावर 1, वेयर NO जो है वो कैटलिस्ट है। तो रेट जो है आपका कैटलिस्ट के टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज मैंने तो बोली थी कि जो रेट है
और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ये टोटल 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या क्या है, एक बार फिर से मैं उनको दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, और एक्सपेरिमेंटल से ही पता चलेगा कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकंड है कि रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं उसमें रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो उसकी भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। थर्ड है आपका जितने भी रिएक्टेंट हैं रेट रिएक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन हर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। मतलब आपका ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन में एब्सेंट हो। ठीक है। फोर्थ हो गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं इसमें कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गए आपके 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देन हम आते हैं एक जो गुलबर्ग एंड बागे ने बोला था उसके लिए बताते हैं कि कब आपका गुलबर्ग बागे का लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड रहेगा। तो वो होती है सिंपल ऑब्लिक एलिमेंट्री एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंपल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो अगर रिएक्शन है आपकी मान लीजिए 3A प्लस 2B गिव्स C, तो ये रिएक्शन है कोई भी मान लीजिए। तो ये रिएक्शन जो है इसकी मान लीजिए मल्टीपल स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप है जो आपका 2A है वो रिएक्ट करता है B से और बनाता है P। ठीक है। फिर इसके बाद जो P है वो A से रिएक्शन करके Q बना लेता है, और जो ये Q है वो B से रिएक्शन करके C बनाता है। ठीक है। अगर इन तीनों को हम जोड़ें तो 2A 3A 2B, तो 3A प्लस 2B गिव C। पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया। ठीक है। तो ये आपकी यही इक्वेशन बन गई जो ऊपर वाली। तो ये जो इक्वेशन बनी, क्योंकि ये इक्वेशन पूरी पूरी 3 स्टेप में फॉलो हो रही है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये सब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म जब चैप्टर का एंड होगा, तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही खत्म करेंगे, तो ये तब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें जो ये यल इक्वेशन है वो स्लो है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। मतलब 2A से 2A रिएक्शन विद V करके जो P बना रहा है वो सबसे स्लो है। जो स्लो स्टेप होगा वही रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वही रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और ये जो स्लो स्टेप्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ये जो पूरी क्वेश्चन है ये 3 स्टेप में बनी है। ठीक है। तो 3 स्टेप में जो ये सिंगल सिंगल स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे ना लिखा के मैं इन तीनों को बताता हूँ। जो ये तीनों हैं वो हैं एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। तो अगर ये एलिमेंट्री स्टेप है तो अगर, और इसमें जो ये पहला क्वेश्चन जो है वो स्लोएस्ट है, ये दोनों फास्ट हैं। तो जो फास्ट होंगे उसमें क्या होगा कि पी ने ए के साथ रिएक्शन कर क्यू बना लिया और बहुत जल्दी बना लिया। सिंस ये बहुत जल्दी बना लेगा तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने भाई कोई रिएक्शन फास्ट हो गई, आपने जैसे ही कोई रिएक्टेंट डाला और तुरंत तुरंत ये बन गया प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। जब रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई तो आप भाई हम लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसका रेट, भाई कंसंट्रेशन कितनी देर में रहा, तो वो सब नहीं निकाल सकते ना। जब रेट निकलेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उस रेट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो जो स्लो स्टेप होगा जिसमें हम लोग को दिख रहा है हाँ धीमे धीमे प्रोडक्ट बन रहा है तो स्लो स्टेप है, तो धीमे धीमे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी घटती जाएगी और पी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी धीमे धीमे। जब ऐसा स्लो स्टेप होगा तो उस स्लो स्टेप को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसीलिए जो रेट एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कि स्लो स्टेप पे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और एक्चुअली एट द एंड जो आपका उस स्लो स्टेप से रेट निकालेंगे और वो मैथमेटिकली प्रूफ भी होता है कि आपका जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए वो वही आती है कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो वो प्रूफ कर लेता है। तो अगर और ये अगर ईच स्टेप जो है एलिमेंट्री स्टेप है तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को वैलिड मानेंगे और डायरेक्टली इसका हम लोग वो लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा ए का स्क्वायर विद के एंड बी की पावर 1। ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल में क्या होता है? इसमें 3 स्टेप होते हैं। भाई 3 स्टेप्स होते हैं। इस तीन एक पर्टिकुलर स्टेप में रिएक्शन कई सारी हो सकती है, 3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप उसमें होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन इनिशिएशन ठीक है, INITITION इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन प्रोपगेशन एंड थर्ड स्टेप होता है उसमें टर्मिनेशन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं। अब इन 3 स्टेप में कोई भी स्टेप में आपकी डिटरमाइन स्टेप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में लेकिन कोई एक होगा। ऐसा नहीं कि तीनों एक समय हो जाएंगे। कोई भी एक होगा जो स्लोएस्ट होगा। जो स्लोएस्ट होगा वो डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। और डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें वो जो स्टेप होगा वो सिंगल स्टेप होगा, एलिमेंट्री स्टेप होगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 2x + 3z gives 4p। ठीक है। और इट इज रिटन, ये रिटन है कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये गिवन है तो आपका जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो के एक्स का स्क्वायर एंड जेड का क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। कोई कुछ कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दिखा हुआ है जिस एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको रेट नहीं दिया हुआ है तो रेट डायरेक्टली हो जाएगा। ऑर्डर भी निकालना है 3 2 + 5 हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक और एक एग्जाम्पल ही है क्वेश्चन। तो ऐसी कौन सी ऐसी रिएक्शन है H2 + IT की जो रिएक्शन होती है ना, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। H2 + I2 की रिएक्शन जो 2HI बनती है उसका जो रेट होता है ना वो सिंपली सिंपली उनके स्टैक्योमेट्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर गोल्डबैंग और बागे का लॉ। सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज ट्रू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसे ही हम एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है। अगर ये वो होती एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो आर क्या आता? KH2 की पावर 1 एंड Cl2 की पावर 1 ये आता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, अगर एक्सपेरिमेंट से निकला, बाय एक्सपेरिमेंट जो आर निकला वो ये निकला KH2 की पावर 0
NCl2 की पावर भी 0 मीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट, ना क्लोरीन की, सिर्फ और सिर्फ के पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है नॉट अ नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्योंकि भाई ये आपका एक्सपेरिमेंट से ये आपका एलिमेंट्री बता रहा था, तो सिंपल हो गया कि ये आपके एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये होगा सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है और किसी रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन जनरली बहुत कम होती हैं, सब रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती हैं। अधिकतर जो रिएक्शन होती हैं या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगी या फिर आपकी सिंपल आयनिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो कोई भी प्रकार की रिएक्शंस हैं उसमें नंबर ऑफ स्टेप फॉलो होंगे। अगर नंबर ऑफ स्टेप है उसमें आपका कोई भी वन ऑफ द स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो टोटल जो आपकी रेट एक्सप्रेशन आएगा बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। सो अगर रेट एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स आ रहा है इसका मतलब है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, यही चीज पहले ही बोली थी, यही चीज आपको मैंने जैसे बता भी दिया कि किस रिएक्शन के लिए गुलबर्ग बागे का लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड रहेगा, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर मैं लेक्चर 3 को ख़त्म करता हूँ। तो लेक्चर 3 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनिशियल रेट लॉ या इनिशियल रेट कांस्टेंट जो भी है। ठीक है।